Oftentimes when we sit and have conversations on where India is going, those conversations become rather academic. They become academic because what do we base it on? We base on statistics. Okay, statistics tell us that this scheme has come out and these many crores have been spent, and therefore there are these many lakh people who have benefited, and therefore something has happened, right? Because of the scale of this country, where doing a few thousand of anything doesn't really matter, it's a dip in the ocean, it has to be done in the millions, sometimes in the hundreds of millions. Think about it. Jan Dhan accounts, that's 300-400 million have to be created. So development in this country has to happen at the scale of entire nations of populations and many times over across the world. Schemes have to apply at nations of populations and many times over. Now, some of you might recall that scroll back to New Year 2022-23. We did a series of telecasts, in fact, almost 12 hours of programming, where we found the people across the country from different parts who were supposed to be the labdhari, the beneficiaries of their schemes. Have they actually got a house? Have they actually got a nalka? Have they actually got a toilet? Have they actually got an LPG Ujjwala connection? Has this actually changed their lives? Has this actually happened? And are their lives actually being changed? The anecdotal evidence becomes important. So we did it in the new year of last. We did a similar kind of a ground reality dipstick test, I call it, in my edit meetings during August 15th this year. We've recently completed yet another ground series survey. You'll be seeing those telecasts on NewsX coming our way, which is done by us. Now, simultaneously, the government and PM Modi have been calling and doing this Viksit Bharat Sankalp Yatra, a dedication to a developed country of India tour. That's the translation roughly. And he's interacted with in various symposiums, online, offline, around about, we've been told about 4.5 lakh beneficiaries. That's again a small number. It's 450,000 in millions and millions of beneficiaries. So now what we are going to do in the course of this telecast for people watching both in India and across the world on the basics, is there development happening in India? Put aside the statistics, which you may believe, may not believe, may think are hyped up, watered down, put them aside. Can we speak to real people, and are those real people seeing real change? So over the course of this telecast, we have joining us Mr. Shubh Narayanan. He is joining us from Bihar. He has received medical aid under Ayushman Bharat. Ghanshyam, who's from UP, has also been a beneficiary of the Ayushman Bharat scheme. Kushal Pal Singh, he's been a beneficiary of the Kisan Samman Nidhi. He's from UP. This is that 6,000 rupees per year direct DBT. Anand Kumar Tiwari, he's received a house under PM Awas Yojana. Renu is joining us. She's also a beneficiary under the PM Awas Yojana. Bhagwati is joining us. She's from also a beneficiary under a PM Awas Yojana of a house. Omkari is joining us. He is also a beneficiary of the PM Awas Yojana. Yashpal Singh is joining us. He is a beneficiary of one of the health schemes, Ayushman Bharat. And Sanket Goel is joining us. He is been working in this one district, one product scheme, which the UP government has taken out in coordination with the center. And to put this into perspective, Dr. PSP Rao is joining us, and Mithali will be joining us just to put things in perspective. So let me start with Mr. Anand Kumar Tiwari. Tiwari जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes sir, yes sir. आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिवारी जी, आप कहाँ से हैं? मैं सर निगुहा लखनऊ से हूँ। समाज सेवक आनंद तिवारी, बॉडी डोनर, पूर्व पत्रकार, ग्रामीण उत्तर प्रदेश वाणी पत्रकार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष रहा आनंद तिवारी। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, बहुत गरीबी से पला बढ़ा रहा हूँ। और अब आपको मैं सामने पीछे दिखा दें, मेरा घर गिर गया था। अब मैं कुछ माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय योजनाएं चल रही हैं उसका मैं लाभान्वित हुआ, बड़ा खुश हूँ। बताएं क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? तिवारी जी, तो आपको ये जो आवास योजना निकली, जी सर, आपको इसकी खबर कैसे मिली कि देखिए ऐसी कोई स्कीम आई है प्रधानमंत्री की?
नहीं, ये तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी पहले जैसे ही प्रधानमंत्री बने, हमारे देश में हम लोगों को लहर आ गई। और उनके वादे के अनुसार हम लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमारे प्रधान लोगों ने हमारे लोगों की जो दुर्दशा देख के तुरंत नामित नामित लोगों को, जो लोग पात्र थे, उनको दिया। बस यही अब मैं कहना चाहता। तो नहीं, लेकिन कि ज़िला के कोई प्रवक्ता आपके पास आए, आपके पास कौन से ऑफिशियल आए, कौन से अफसर आए? देखो, अब मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ का प्रधान नौजवान है और बड़ा बृहद समझ लो कि बुद्धिमान है, और उसका दूर दूर तक बड़ा पहुंच है। वो जो भी योजना आती है हमारे गांव में विधिवत उसका पालन करवाती है और करता रहा। पूर्व प्रधान भी नौजवान था। और जैसे पानी की टंकी, तो गांव में समग्र विकास की धाराएं नौजवानों के हाथ से बहती रहती है। और इस समय भी नौजवान प्रधान है, वो भी समझ लो बहुत कर्मठ है। और भारत सरकार के बाकायदे नियम और आदेश का पालन हो रहा है, और उसी का हम लोग लाभ ले रहे हैं। ओके, तिवारी जी, तो आप कह रहे हैं आपके ग्राम प्रधान नौजवान थे, उन्होंने आपको बताया कि जी की आवास योजना निकली है, और ये आवास योजना निकली थी कि अगर कुछ काम शुरू कराएंगे तो आपको किस्त मिलेगी 50,000 की, फिर एक और 50,000 मिलेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने फिर घर पे काम शुरू कब कराया, आपको पहली किस्त कब मिली और घर खत्म कब हुआ? ये तो पुरानी बात है, लेकिन हमको किस्त बाय किस्त हमारे खाते में पैसा आता गया, डीपीटी करा दी गई थी। जैसे प्रधानमंत्री वो जो जनधन योजना खाता खुलाए गए थे ना। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। तो आपका जनधन का खाता कब खुला था? 4-5 साल पहले जनधन खाता कब खुला था? वाली सरकारों में बिचौलिया खा जाते थे। प्रधान के पास पैसा चला जाता था, अधिकारियों के पास पैसा रखिए, अब दिला देंगे, तब दिला दे देंगे। जैसे ही ये हमारे देश में ये लागू की गई माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, डीबीटी खुलवा के, खाता खुलवा के डायरेक्ट पैसा मिलता गया। जैसे जैसे मिलता गया वैसे मैं बनवाता गया। तो आपका पहला तो जनधन का खाता खुला, फिर आपको आवास योजना का डीबीटी डायरेक्टली आपके खाते में पैसा आया। जी हाँ, पहली किस्त कितनी की मिली थी आपको? पहली शायद 50-50 हजार रुपए की मिली थी, शायद याद नहीं। 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। और आपको फिर आपको जब पहली किस्त मिली और आपने काम शुरू करा दिया, तो फिर दूसरी किस्त भी आपको समय से मिली? हाँ, समय से मिली। फिर उसके बाद जो उसका वो नरेगा का पैसा जो मेहनत करा, उसके बाद लास्ट में उसका भी पैसा मिला। तो आपको नरेगा स्कीम से भी पैसा मिला, आवास योजना की किस्त भी मिली। तो आपका मकान बन गया है? हाँ जी हाँ। Sorry, we are having switching issues. We'll get that sorted out so that we can sort this out. Why don't you make it full frame so that you can take this in 2 windows, so that switching is not the chaotic operation that we're doing, so we can actually listen to the people who are actually speaking. Forgive me, sir. तिवारी जी, तो आपका मकान बन गया है? जी 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 जी। मकान कब खत्म हुआ आपका? मकान तो बन गया, लगभग हो गया साल वाल, लगभग 1.5 साल हो गया। तिवारी जी, क्या आप अकेले हैं कि आपके गांव में, ग्राम में और भी लाभधारी ऐसे जिनके मकान बने हैं? नहीं, बहुत सारे लोग हैं गांव में। 300 करीब 66-63 मकान थे। सब लोगों लगभग सबको बन गए हैं। हम लोग खड़हर में रहा करते थे। तो क्या पक्का मकान है, लेंटिल लग गई है? हाँ, लेंटर सब लग गई है, लैट्रीन मिल गई है। और क्या नाम, वो आपकी जो खाते में पैसे उसके आते, खेती वाले हम लोग परेशान होते थे, उसका पैसा आने लगा है। और लैट्रीन के लिए परेशानी होती थी, लैट्रीन दे दी गई है। और उसके बाद उजला वाला कनेक्शन, कहना चाहिए साहब कि वो हमारे दरवाजे तक खंभा लगा के हमको कनेक्शन दे दिया गया है। किस तरह वाह बल्ले बल्ले किस तरह करूं? तो अब इससे ज्यादा कौन सी सरकार कर सकती, कौन प्रधानमंत्री कर सकता है? अभी तक तो हम ऐसे ही थे। हमारे रसोइया में समझ लो कि लकड़ियां नहीं उड़ती थी। हमको उजला कनेक्शन और क्या नाम, और गैस और उजाले के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए रोशनी, ये सब मुहैया करा दी गई है। तो आपको घर में अब पानी मिल रहा है, नल भी लग गया है? हाँ, नल अब थोड़ा गड़बड़ी थी। हमने परसों फोन किया था, आज जल निगम आके हमारे यहाँ दूर कनेक्शन था, आज यहाँ आके सर्वे करके अभी मिस्टर पांडे अभी सर्वे, तो आपके लाइफ से पहले 1 घंटे पहले आज सर्वे करके गए, आदेश करके गए। कनेक्शन आज ही कल में लग जाएगा। तो आपको और गांव में पूरे पानी आता है। लेंटल के साथ पक्का मकान मिल गया है, लैट्रीन लग गई है, बिजली का कनेक्शन मिल गया है, गैस का कनेक्शन मिल गया है, और पानी का कनेक्शन भी मिल गया है। और आप मेरे साथ इंटरनेट से जुड़े पड़े हैं, तो आपको लगता है कि आपके ग्राम इलाके में इंटरनेट भी ठीक चल रहा है? अरे बहुत बढ़िया चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। सारी सुविधाएं, कहीं कभी कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब तो तमाम सभी कार्य खुल गए हैं और जनसेवा केंद्र खुल गए हैं। कोई तकलीफें नहीं तो हम लोग तो फोन करने के लिए तो एक जमाना था तरसते थे। आज तो हर व्यक्ति के हाथ में हम देख रहे हैं कि वो मोबाइल है।
और फेस बाई फेस बात कर रहा है। अभी मैं आज ही की बात बता दूंगा, मेरा एक भाई दिल्ली है, वहाँ रह रहा है, और यहाँ हमारे पास 4G का एक बच्चे को, वो BA में पढ़ता है, पुलिस की नौकरी के लिए फार्म भरा, और यहाँ से तुरंत मिलाया, बोले देखो चाचा से बात कर लो। बाई फेस वो कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, बाई फेस बात होती है। वीडियो कॉलिंग करते हैं आप। तो आपकी और आपकी परिवार की पढ़ने की, काम करने की ज़िंदगी कैसे बदली है पिछले 3-4 साल में? तिवारी जी, आपके और आपके परिवार की ज़िंदगी कैसे बदली है 3-4 साल में? अरे 3-4 साल में समझ लो कि जैसे कि आसमान में उछाल लगा दो, सब कुछ बल्ले बल्ले हो गया। इससे मौके क्या मिल रहे हैं नौजवानों के? इंटरनेट आ गया है, पक्का मकान मिल गया है, पढ़ाई करने के लिए बिजली आ गई है। इससे नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, उनमें एक नई ऊर्जा पैदा हो गई है, और उनमें कुछ करने की तमन्ना जाग गई है। अपने देश में, देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ करने की उनमें जज्बात पैदा हो गए हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तिवारी जी, जब हम खबरें पढ़ते हैं, और आपको भी खबरें आती होंगी कि भारत प्रगति कर रहा है, विकसित भारत बन रहा है, हम विश्व में पांचवीं अब इकोनॉमी बन गए हैं, 5वीं सबसे मजबूत देश बन गए हैं आर्थिक स्थिति में, ये आपको खबरें अब कैसे लगती हैं? क्या आप कहते हैं, आपको लगता है कि हाँ भारत प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है? ये कोई झूठी बात नहीं, एकदम ओरिजिनल सच है कि हम आज कल कहाँ थे, आज हम कहाँ आ रहे हैं। और अगर इसको भी कोई अगर नकारता तो उसके DNA में मतलब समझ लो कि खराबी है। आप कहाँ थे और आप कहाँ पहुंच रहे हैं, आप देख रहे हैं। हम कोई झूठा, हम किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ क्या, हम अपनी औरत का आदमी हूँ, हम हिंदुस्तान का आदमी हूँ, हम अपने देश का आदमी हूँ, अपने घर परिवार का आदमी हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। वो लोग अनर्गल प्रभाव कर रहे हो कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम कल कहाँ जमीन में थे, आज आसमान में, आज हम चांद की सैर कर रहे हैं, वहां की औकात नाप रहे हैं। और कल भारत कहाँ था, आज भारत ने पूरे विश्व के मानस पटल पर अपना डंका बजा दिया है महोदय। ओके। मैं अयोध्या से, निगोहा से लेकर के अयोध्या तक क्या नाम है, पदयात्रा करने वाला आदमी हूँ। और मैं कुठारी बंधुओं को कंधा देने वाला 5 आदमी थे निगोहा से। मैं निगोहा से वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन से अजमेर शरीफ तक पदयात्रा करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं निगोहा से इधर आपके इलाहाबाद, विंध्याचल, बाबा विश्वनाथ तक सद्भाव, शांति, एकता की पदयात्रा करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं बॉडी डोनर हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं 2 बच्चा और 2 हमारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, आज हम कम से कम हमको 4,000 हमारी खेती में हर तिमाही किस्त आ रही है। हम परेशान दाने दाने हुआ करते थे, कम से कम 3,000 आ जाते हैं तो कम से कम खाद पानी इधर उधर का सब व्यवस्था करके 4 कुंटल 10 कुंटल अपने घर में पैदा करके रख लेते हैं। और अगर कोई कहता देश आगे नहीं बढ़ा तो वो बेईमानी बतला रहा है अपने देश के साथ, अपने घर के साथ में, अपने देश के मुखिया के साथ में। ओके तिवारी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और दुआएं और आशा कि आपका और आपका परिवार आगे भी प्रगति करे, उन्नति करे, और मजबूत कदम उठाए देश की प्रगति के लिए भी। Thank you very much for joining us and telling us your story. So that was an individual from the rural outskirts of Lucknow, Mr. Tiwari, who has not only received a house which he's been able to build under the PM Awas Yojana. He has had a bank account made. He has received a toilet. He now gets water. He has internet, as you've seen, stable internet in a rural area where he's able to do video calls very easily. There's an electric connection which he has received, and he's not the only one. He's saying up to 300 people in and around his area have got houses that have been built. Pakka ghar, the concept of a pakka ghar and lentil is or rather was a huge deal in rural India. Concrete roof, it's a huge deal, and you can't explain to someone who's not had a pakka ghar how much is of a psychological change it is in society. Your self-respect, your all your thoughts increase completely differently. Let me rope in Ghanshyam ji from UP as well. Ghanshyam ji, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? घनश्याम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, मे बी कांट हियर। हाँ घनश्याम जी, आवाज़ आ गई आपको? मैं ऋषभ बोल रहा हूँ सर, यहाँ दिल्ली से, स्टूडियो से। घनश्याम जी, आप कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी में कहाँ? सिद्धार्थ नगर, बस्ती जिला, सिद्धार्थ नगर।
और घनश्याम जी, आपको आयुष्मान भारत स्कीम से फ़ायदा मिला है, तो आप बता सकते हैं कि परिवार में कौन 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 बीमार था, कि क्या क्या मुसीबत आ गई थी? हमारे स्टैंड थे भैया। हेलो। हाँ जी जनाब, आपका शुभ नाम? प्रेम सागर मेरा नाम है, सुबह नाम है। एक घनश्याम जी का छोटा भाई मैं हूँ। सागर जी, हमें बताएं, आप यूपी में कहाँ से हैं? बस्ती जिले से। बस्ती ज़िला से। सागर जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी क्या कौन बीमार पड़ गया था परिवार में, जिसके लिए आपको अस्पताल जाना पड़ा था? ये मेरे बड़े भाई हैं। ये हार्ट हार्ट का इनका प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था। मैं इधर उधर भटक रहा था, मुझे ज्ञान नहीं था। एक लोगों ने बताया कि आयुष्मान भारत मैंने पहले बना रखा था, तो उसका लाभ मुझे योगी जी को, मोदी जी के बार बार एड को देख करके मुझे पता चला। और मेरा ये भांजा रहा था दिल्ली में, उन्होंने बुलाया, आइए यहाँ पे इलाज करवा देंगे आयुष्मान द्वारा। और हमारे पास आर्थिक स्थिति बहुत तंगी थी, जो मैं नहीं करा सकता था। जो तो आपके आयुष्मान आपके आपके आप दोनों के बड़े भाई थे, तो ये हाँ, दो आयुष्मान भाई थे। कार्ड कब कब बनवाया? आपको खबर कैसे पता चली कि आयुष्मान कार्ड जैसा कोई स्कीम आई है, ऐसी कोई निधि और विधि आया है? कैसे आपको किसने बताया आयुष्मान कार्ड के बारे में? गांव में कैंप लगती है सर, गांव में कैंप लगी थी, वो कैंप के माध्यम से हमको पता चला। तो आपका आयुष्मान कार्ड कब, कितने साल पहले बनवाया था आपने पूरे परिवार के लिए? अभी ये लगभग महीना 1.5 महीना हुआ बना है, अच्छा। ज्यादा नहीं। और फिर आपने बोला आपको दिल्ली जाना पड़ा, तो आयुष्मान कार्ड से आपको क्या खर्चा उठाना पड़ा, या अस्पताल में सीधा कार्ड से सारा काम हो गया? हमें एक पैसा भी देना नहीं पड़ा जेब से, और सारा कारोबार आयुष्मान भारत से हुआ है। तो आपके जो बड़े भाई जी थे, उनको आप बोलो कार्डियक की बीमारी थी, तो कितना टाइम उनको अस्पताल में बिताना पड़ा? उनका ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ? स्टेंट लगा, क्या हुआ? एंजियो हुई, क्या हुआ? अभी एडमिट करा। अभी ऑपरेशन नहीं हुआ, ये एडमिट हो गए हैं। वो कोई प्रॉब्लम था, इस कारण से ऑपरेशन नहीं हो पाया। कल ऑपरेशन बोलने हैं डॉक्टर साहब तो अभी ये बोल। चल रहा है, और अस्पताल के अधिकारियों ने क्या बोला है? कि आप बोल रहे हैं कि भी आयुष्मान कार्ड हो गया, तो आपको कुछ और कहीं पेपर वर्क में कहीं फंसे हैं, कि कहीं कहीं पर फंस गए हैं, या सादा काम आयुष्मान कार्ड से हो गया आपका? नहीं नहीं, पेपर से कहीं नहीं फंसे हुए हैं। वो शायद वो जो उसमें छल्ले पड़ते हैं, वही साइज का नहीं मिला था। स्ट्रेंथ है, हाँ। स्टंट लगने वाला। स्ट्रेंथ लगने वाला था, वो साइज का नहीं मिल पाया था, हाँ। इसलिए हटा दिया गया था। कल होगा, तो डॉक्टर साहब कल बोले। तो डॉक्टर साहब आपकी मदद कर रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड से आपका सारा काम निपट जाए? फुल मदद कर रहे हैं, फुल मदद कर रहे हैं हमारा। सागर जी, अगर नौबत आती और आयुष्मान कार्ड नहीं होता, तो परिवार को क्या दिक्कत संभालनी पड़ती, आर्थिक दिक्कत संभालनी पड़ती? संभवतः जीवन नहीं बचा पाते। तो आपके लिए और आपके परिवार ये लिए, तो ये तो जीवन रेखा है, जीवनी है आपके लिए। वरदान साबित हुआ सर, अब हमारे आपको, परिवार के लिए आयुष्मान भारत वरदान साबित हुआ। आपके भी कोई ओस पड़ोस में या कोई और परिवारवादी हो जिनको पता हो, या वो भी आयुष्मान भारत पहले इस्तेमाल करे हों? आयुष्मान भारत अन्य लोग यूज किए हैं, प्रयोग किए हैं। हाँ, बहुत से लोग प्रयोग किए हैं गांव में। मैं गांव से जुड़ा हूँ। अच्छा सागर जी, ये बताइए कि काफ़ी और स्कीमें हैं भारत सरकार की, जो हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं। अगर कोई आपातकालीन हो जाए, उसके लिए इंश्योरेंस मिलती है। आवास योजना है, घर बना रही है। जन धन अकाउंट खुलवा रही हैं। क्या आपने किसी और योजना का लाभ उठाया है आपके परिवार ने? हमने अभी नहीं उठाया, ये आयुष्मान भारत को उठाया। मेरे परिवार ने पीएम आवास योजना का मेरा छोटा भाई उठाया लाभ। तो आपके छोटे भाई ने पीएम आवास योजना की किस्तें मिली उनको घर बनाने के लिए? चलिए सागर जी, आपको और आपके परिवार को, जो आपके बड़े भाई अभी अस्पताल में हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि उनका ऑपरेशन आसानी से जाएगा, और आपको ऑपरेशन का या अस्पताल का खर्चा कुछ नहीं निभाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये भी इंश्योरेंस स्कीम है। आप अपनी हेल्थ और परिवार की सेहत के लिए आपको बहुत बहुत दुआएं। दैट वाज
Ghanshyam and Sagar, two brothers whose elder brother, of course, is in hospital in Delhi, pending operation tomorrow. And the doctors are helping facilitate a cost-free treatment, which he says otherwise the family could not have afforded, which means that the family would have either gone into debt or they would not have been able to save their elder brother, which would have been, of course, heartbreaking. Shubh Narayan ji is joining us. He's from Bihar. Shubh Narayan ji, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शुभ नारायण जी आपको इस हमारे टेलीकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। शुभ नारायण जी, आप बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में छपरा जिला सर। छपरा से हैं और आप मुझे बताया गया है कि आप भी आयुष्मान भारत स्कीम के लाभधारी हैं। ये मामला पहले का है या अभी चल रहा है? ये सर पहले तो पता था मेरे को, लेकिन एडमिट में हुआ हूँ कल। तो मेरे को इसे गांव का आदमी ने बोला कि आयुष्मान भारत बना लो, आपको बहुत लाभ होगा, मदद होगा। तो सर हम लोग भी तो गरीब आदमी है, अमीर आदमी तो है नहीं सर। तो फिर हम लोग आयुष्मान कार्ड में बनवाया। तो क्या दर्द और दिक्कत थी कि आपको लगा कि अस्पताल जाना पड़ेगा आपको? सर ये अचानक मैंने एक दिन सोया था तो 4 बजे सुबह में उठा तो मेरे कमर में पूरे शरीर में दर्द हो गया। दर्द हो गया, मैं गिर गया। तो फिर मेरे को आदमी लेके गया इसे प्राइवेट ऐसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो बोला लो कि हार्ट में आपका प्रॉब्लम है। तो कहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि आयुष्मान भारत का कार्ड बनाना चाहिए आपको? मतलब मैं रायपुर में काम करता था सर। रायपुर में? हाँ। तो कार्ड वहीं से बन गया कि आपको घर वापस आना पड़ा? कार्ड घर पे बना सर। तो कार्ड आसानी से बन गया कि उसमें कोई मुसीबत दिक्कत हुई आपको? नहीं सर, मुसीबत तो कुछ नहीं हुआ। अब डॉक्टर साहब, अभी आप कहाँ पर अस्पताल में कहाँ पर भर्ती हैं? मैं सर राम मनोहर लोहिया में हूँ, दिल्ली में आ गए हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला कि आयुष्मान कार्ड बन गया है, तो आपको जेब से कुछ पैसा खर्ची करना पड़ रहा है? नहीं सर, जेब से तो पैसा नहीं लगा है। और आपकी भर्ती हो गई है अस्पताल में या होनी है? नहीं सर, भर्ती तो हो गया है। हाँ, हो गया है सर। तो आपका इलाज कब शुरू कर रहे हैं या शुरू हो चुका है? शुरू हो चुका है। अब देखिए सर, कल परसों ऑपरेशन भी हो सकता है। अच्छा, ऑपरेशन भी होगा। अच्छा, ये शुभ नारायण जी मुझे बताइए, अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता और आपको खर्चा उठाना पड़ता इलाज का, अस्पताल का, तो आपका परिवार कैसे उठाता? सर वो तो बहुत हमको सहारा मिल गया सर, बहुत सहारा मिल गया। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से उतना पैसा कटा। ओके, शुभ नारायण जी, जी सर, आपको और आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत दुआएं कि आपका अस्पताल में ऑपरेशन अच्छा जाए और आप वापस निकलें और अपने काम में लगें और आप अपना और अपने परिवार के लिए मेहनत करें और तरक्की करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद and we wish you the best that your operation goes well. So that was Mr. Shubh Narayan. He is from Chhapra in Bihar. He was working in Raipur and when he had what is obviously a cardiological problem, he is now admitted to the Ram Manohar Lohia Hospital in Delhi, where the doctors themselves have told him that you can get the Ayushman Bharat card made and that look after your expenses, which of course is literally life-saving for him and his family. Thank you very much for joining us, Shubh Narayan ji. Let me try to get in Rajkumar and Nepal Singh. Rajkumar ji, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? राजकुमार जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। राजकुमार जी नमस्ते, मैं ऋषभ गुलाटी हूँ, न्यूज़ एक्स का एडिटर इन चीफ। आप कहाँ से हैं राजकुमार जी? कहाँ पर? जहांगीरपुरी से? जहांगीरपुर, यूपी से जहांगीरपुर से। मुझे बताया गया है कि आप दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, क्या काम है आपका? दुकान है सर। तो दुकान में क्या बेचते हैं आप? परचूने का सामान है, नमकीन वगैरह, बिस्कुट वगैरह है, दूध है। तो डेली नीड्स का नमकीन, दूध का सामान बेचते हैं। तो अब ये बताइए कि ये जो स्वनिधि योजना जो प्रधानमंत्री ने निकाली थी,
इसके बारे में आपको पता कैसे चला? ऐसे ही सर बैठे थे साथ में ही पता पड़ गया था, फिर बैंक जाओ और बैंक से मालूम कर लो, बात हो जाए। तो मैनेजर साहब के पास आए तो बताई थी उन्होंने, तो आपके पास आया था, मैं सर दुकान के लिए चाहिए थोड़ा इतना। तो आपके उन्होंने पास कर कोई दिया। आया और उन्होंने बोला कि अगर आप जाएंगे और यहाँ पर पेपर भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो आपको इससे योजना से लाभ मिल सकता है। जी सर। तो आपने इस योजना का लाभ उठाया है? आपने इसमें से लोन, कर्ज, कुछ किश्त कुछ लिया है? जी लिया है सर, 20,000 का मिला है। 20,000 का किश्त लिया है। और जी उस किश्त लेने में कोई मुसीबत पड़ी या आसानी से हो गया काम? नहीं सर, आसानी से हो गया था, कुछ नहीं हुआ था। बोला था कि फोटो चाहिए गई है, तो वहाँ से दुकान का फोटो चाहिएगा। सर वहाँ से फोटो खींच के दिया, दिखाया सर को, देखने भी गए रिकवरी पे, देखा था हो गया था। तो ये किश्त आपको, इस किश्त लेने से आपको क्या सहूलियत मिली? सर मेरी दुकान में सामान भर गया और क्या हुई। तो आपने वो 20,000 रुपये लेके अपनी अपनी स्टॉक खरीदी है, जिसको आप आगे बेच जी के फिर मुनाफा कमा सकते हैं। जी सर। तो क्या क्या अधिकारियों ने बताया है कि अगर आप किश्त वापस करें तो फिर अगली बारी 50,000 रुपये ले सकते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो क्या आप आशा करते हैं कि किश्त वापस करके फिर अगली 50,000 रुपये की अपनी दुकान बढ़ाएं, आगे और बड़ी बनाएं? सर बनाएंगे अगर सही चला तो रोज़ाना की दुकानदारी में किसी से, अगर बैंक से किश्त लेना आसान हुआ करता था? कभी पहले आप बैंक से कुछ लोन वोन ले पाए थे? हाँ जी लिया था, पहले 10,000 का लिया था, मतलब 20,000 लिया। तो ये कुछ दुकानदार होते हैं जिनको गांव में या शहर में किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से कभी पैसा लेना पड़ता है, उसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होती है, चुकाना मुश्किल पड़ जाता है। इसमें ज़्यादा आसानी दिख रही है आपको? जी सर। तो अब आप क्या आशा करते हैं कि आगे आगे जाके अपनी दुकान और ज़िंदगी में अपनी 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 प्रगति के लिए, उन्नति के लिए क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, ये किस्त पूरी हो जाए फिर आगे भी बढ़ के मिल जाए। ओके, तो आपकी दुकान आगे आगे बढ़ेगी। राजकुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप तरक्की करें और आपकी दुकान आगे चले और आप पूरे परिवार को और पूरे देश को आप नाम कमाएं सबके लिए। लेट मी ट्राई टू गेट इन नाउ इफ आई कैन। संकेत गोयल, संकेत जी, कैन यू हियर मी? Basically, Sanket is not here. I am representing Sanket. What's your name, sir? Currently, my name is Harshit. Harshit, hi. Okay, so Hi. I'm told you guys are based out of Aligarh, is that correct? Yes, we are based out of Aligarh. So can you tell me what kind of manufactory or enterprise are you involved in? Basically, we are a manufacturer of door handles, door locks, and cabinet handles, and there are multiple things. We produce roughly around 100 different types of items. Okay, so how long have you been in this business, sir? It's a parental business. Yeah, sorry, I lost you for a second. Carry on. We are into this business in last 30 years. For 30 years. So Yeah. you've been involved in the business for the last 30 years, sir. So when we are now talking about development in your native state, Aligarh in UP, have you seen changes? Has life become easier? Is it become easier to do business, sir? Frankly speaking, I've been into this business from last 10 years, and I have seen a tremendous change with respect to all sorts of technicalities, all sorts of paperwork, and all those stuff. And I think it is very easier than before, because when we were as a kid and we were listening about the things, it becomes very tough for us to understand why are we doing this business if so much paperwork and all those stuffs are there. But from frankly speaking, last 10 years, it is very good. Okay, so what have you thought about this idea of one district, one product, sir? And what have you understood from it? And are you interested in partaking with this logic? Yeah. So basically, this is a scheme which is being promoted by the Chief Minister of UP, and in this particularly for the one district, one product, they have actually promoted a scheme wherein a person can take a loan for their facility to upgrade their technologies. Okay, and for this particular technologies and all, they are providing the subsidy over the loan interest. Okay. So
for us, if you talk about for us, uh, currently all businesses are into the range of 8 to 10% of profit. And if we take loan, we need to pay roughly around 10% to the bank first, and then we have to work around. So it is very good in terms of taking availing this particular scheme, wherein we have availed 25 lakhs, and we got the rebate of 6.25 easily from the government. And this actually help us in maintaining the cash flow also, working capital also, as well as, and reduces our burden on the interest. Okay, so you're paying only 6.25 interest. Interest is more, but we have the subsidy. The which subsidy government is 6%. Subsidy is actually 25% of Right. 25 lakhs. It is 6.25 Okay. lakhs. All right. So, in trying to avail the scheme, now, how did you find out about the scheme? Did you read online? You saw it in the press? How did you find out? See, we have read in the newspaper, and we reached to the DIC office in Aligarh, wherein Mr. Shailendra Chauhan, who has helped us to get this scheme benefit, and he has helped us a lot in this particular. So, what's the process and the paperwork? And in India, often paperwork and everything in triplicate, and your birth certificate and this certificate can become very painful. Was it a bit easier this time around? See, they have given us a list of the documents which we need, okay, and we have taken those printouts and all. We have submitted it, but the only thing is that we need to associate with one of the bank who will provide the loan with respect to this subsidy, and I think it's like a 7 to 8 days job. Okay, just 7 to. I was about to ask you how many months did it take. So, in a couple of weeks. Yeah, in a couple of weeks. Okay. All right. Have you seen other business families and other friends also now maybe seen your example, or you've seen other people who are also saying, listen, this is helping us, like you said, with our cash flow, having a lower interest rate? Yeah. Actually, we not only in the district of Aligarh, we have actually approached to our relatives who are actually working in the different parts of UP, and they have the different products in their particular region, which is promoted by the government. So we have actually told those people also to, if you want to upgrade your technologies, you can do it by this particular scheme. Okay. So now, what are your plans, sir? What's your brand called? Are you a wholesaler? Do you supply retail? What do you supply, sir? Sir, we are a manufacturer, we are a wholesaler also, and we work as a retailer, because retailer is like we are promoting our products on the Amazon also. So you can term as a retailer also. Okay, Our so brand is what's the brand called? Allied. Allied is our brand. Okay. ALLIED. Okay, so a light brand, and you make mostly door handles. Are they for domestic properties, private properties, or are you supplying to businesses and hotels and other things as well? See, we are supplying to wholesalers, we are supplying to the projects also, and we are working closely with the interior designer, decorators, and all. Okay, and you said you have any website? We have the website, but we are actually upgrading it. Okay, so Amazon is the way to find your brand. So in the event anybody wants to either buy wholesale or to procure directly from you, they can find you on Amazon and Amazon, India Mart, Amazon. Okay, Yeah. all right. That was thanks very much, sir, for joining us and telling us your story. Really appreciate it. I'll get my team to send this clip across to you on YouTube once we are done from the live telecast. Pleasure meeting you, Arshad ji, and all the best with your business, sir. Hoping to be a customer sometime soon. Okay, let me quickly get in Kushal Pal ji. Kushal Pal ji, आपको मेरी आवाज आ रही है? कुशल पाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई साहब, आ रही है। कुशल पाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपको न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। आप ज़रा मुझे बता सकते हैं कि आप यूपी से हैं? यूपी में कहाँ से? यूपी अलीगढ़। आप भी अलीगढ़ से हैं। क्या करते हैं कुशल पाल जी? मैं खेती करता हूँ। खेती किसकी? यही गेहूँ, लाह, धान। तो अपनी ज़मीन है आपके पास? हाँ है, मेरी अपनी है। तो खेती कब से कर रहे हैं? खेती मैं तब तक पढ़ा, उसके बाद खेती कर रहा हूँ।
कुशलपाल जी, आप बताइए कि ये जो 6,000 रुपये डीबीटी आता है, क्या आपका खाता खुला था जनधन में? बैंक अकाउंट हाँ है आपके खुला था। पास? खुला था, आता है, मेरा किसान सम्मान निधि आती है। तो ये खाता कब खुला सरकार की तरफ से? जनधन योजना में खाता कब खुला? कितने साल हो गए आपको? खाता तो पहले से ही था मेरा तो। आपका पहले से ही खाता था, तो आपको पता हाँ कब चला कि ये कुछ योजना है कि इसमें हर 3-4 महीने 2,000 रुपये मिलेगा? हाँ, ये एक बार हमारे यहाँ जो लेखपाल और ये सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने बताया, तभी से मिल रही है मुझे शुरू से ही। तो कितने हो गए साल? 2 साल हो गए? हाँ, 2 साल के लगभग हो गए। और जो किस्त मिलती है 2,000 की, वो टाइम से आ रही है? डीबीटी डायरेक्टली खाते में आ रही है? हाँ, डायरेक्टली खाते में आ रही है। कभी 2-3 महीने 2-3 किस्तें एक साथ आ जाती हैं, कभी एक एक आ जाती है। तो आपको अभी तक सारी किस्तें मिल गई हैं? हाँ। अब ये बताइए कि कोई लोग कहते हैं कि देखिए 1,000-2,000 से मोटी रकम नहीं है, इससे सहूलियत क्या मिलती है आपको? नहीं भाई साहब, मोदी ने किसानों की रखी है सुधी, और हमको टाइम से मिल रही है किसान सम्मान निधि। और क्या जो स्कीमें आई हैं, क्या आपको अनाज भी मिलता है हर महीने? अनाज जो राशन वाला? हाँ, राशन वाला। हाँ, राशन भी मिलता है। तो राशन भी टाइम से मिल रहा है? और राशन लेने में कोई मुसीबत दिक्कत हो रही है आपको, या राशन वाला अब ढंग से देता है? नहीं नहीं, ढंग से देता है, कोई मुसीबत नहीं राशन मिलने में। तो इससे क्या आसानी हो गई है आपके कि थोड़ा खाते में थोड़ा पैसा आ जाए, राशन टाइम से बिना मुसीबत के मिल जाए? इससे ज़िंदगी में क्या आसानी हो गई है? वृद्धावस्था में बाबूजी हमारी और कोई नहीं है कमाई, बीमार हो जाते हैं तो इसी से आ जाती है दवाई। आपके परिवार में या आपके आपके कम्युनिटी में, आपके ज़िले में आपके दोस्त होंगे, उनके आपने खबरें देखी हैं कि किन लोगों के घर बन रहे हैं, शौचालय बन रहा है, किसी का गैस सिलेंडर लग रहा है? ये आपने चीज़ें देखी हैं अपने 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 हाल ही में? हाँ, देखी है मैंने। इससे लोगों की ज़िंदगियां क्या, अब आपके घर में अब बिजली पानी मिलता है? हाँ, बिजली पानी समय से मिल रहा है। और जो किसानों के लिए स्कीमें निकाली गई हैं, उससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? किसानों की स्कीमें निकाली गई हैं, जैसे कि हमें बीज लेते हैं तो उस पर भी कुछ सब्सिडी मिल जाती है, खाते में आ जाती है। और जो फसल का कोई नुकसान हो जाता है तो उसका भी भरपाई एक बार हो गई थी हमारी, लाह की सरसों की खेती की। अच्छा, ये आपने सुना है ये आवास योजना के बारे में और आयुष्मान भारत योजना के बारे में कि अगर अस्पताल जाना पड़े तो अस्पताल का खर्चा सरकार उठा लेगी, इंश्योरेंस से उठा लेगी? आपने इन स्कीमों के बारे में सुना है? सुना है, सुना है। तो क्या आप भी आशा करते हैं कि आप भी आयुष्मान भारत का कार्ड बना लें, या आगे जाके अगर कुछ आपातकालीन पड़े तो आपकी परिवार की सहूलियत हो? हाँ, हम भी चाहते हैं सर, अगर ये सुविधा हमको मिल जाए तो 5 लाख तक का इलाज कहीं भी करा सकते हैं। घर में शौचालय बन गया? हाँ, मेरी पत्नी के नाम शौचालय भी बन गया है। फर्स्ट क्लास। कुशलपाल जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छी दुआएं कि आप तरक्की करें परिवार के साथ, देश के साथ। थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। ओके, नाउ लेट मी गेट Dr. Rao and Mitali, who've been patiently listening to all the beneficiaries. Okay, so Dr. Rao, so beyond the statistics, sir, I think you heard it live from people all over the country, yourselves. These are people, real life people whose lives are being impacted by development in India. What do you make of it, sir? It makes me very emotional hearing their stories. Rishabh, good evening to you, the panelists and viewers. I am extremely happy to see what is going on. It's not that I have not worked in rural areas. I have worked initially in rural areas, actually, and I have seen the kind of what you say in Hindi as lachari. The sort of people had sort of given up any hopes of coming out from the poverty, from ever getting electricity, water, and even logistics, which has not been highlighted till now by anyone. I mean, roads have reached there, and various other kinds of transport, like even river water transport, airports in various places. See, if you have an emergency, a medical emergency in some remote place, by the time you come by road, you will be dead.
And that is where, if there is a helipad there is an airport there, these people can be saved, especially in mountainous areas and other remote areas. Okay, so I had to ask you And, specifically. I had to ask yes. you specifically about Ayushman Bharat. Obviously, it's Yes. you're a I doctor. am very happy to hear about the stent which is likely to be placed in him tomorrow, and the fact that these people are able to receive it. And I am looking forward to the day when all the medical colleges and hospitals which are being opened all over India, these people won't have to come to Delhi for that. No, No, that will be a real game changer. So the aims are Yes. opening up, but just on a sheer practicality point of view, Dr. Rao, I mean, even we have faced it. I have faced it. If a decade ago, even if you had insurance, getting the insurance claim processed was a heck of a hassle. Yes. It was not a guarantee that if you had to spend 3-4 lakhs rupees that the insurance company would clear your entire claim. You would still have to Yes. pay out of pocket. It was a stress. Yes. Now, people like you and me can cobble together the 3-4 lakhs. For somebody, the 3-4 lakhs is their annual income for the entire Yes. family. It would, the one person really said that, if we didn't have this Ayushman Bharat card, we wouldn't be allowed to save my brother because we no way could we afford the hospital treatment. How much of a game Yes. changer is this? It is a huge game changer, Rishabh. I have seen in my career, I have been now 45 years in the Department of Surgery. And in my career, I've seen many people whose family sold the house, sold all their assets, came down on the street with the hope of saving that person. And by the time they did all that and collected the money and came, it was too late and the person died. I mean, it is ruining a whole family. It's not just the person who has died for delay or a lack of treatment. It is the entire family now is on the streets, including the children. Who's going to take care of them? Who's going to take care of their education? This is a huge change. And if medical insurance, though we have medical insurance for the last few years, I as a doctor have seen how you may have a cover of 10 lakhs, but they will in small print have said for each particular incident, you can only get up to 2 lakhs or 1 lakh. Then they will have all kinds of other limits. Okay. And they will read out the small print only when you are Dr. in Rao, trouble. then the other thing is, the fact that we've heard from these people Yes. that the doctors themselves are Yes. happy to tell them how to get the card made, where to get it from. They're happy to accept it even if it's made, literally 2 days ago. And they're saying that once you got the card, don't worry about it. How much of that really changes, because when somebody in your family is sick or, has an emergency, medical emergency, the paperwork is the last thing you want to get involved in. You're already stressed out, you're already unhappy, you're already tense. This makes life little bit more peaceful for a person already facing a crisis. Yes, it definitely makes a huge crisis, not only for him, for us doctors. We'll be waiting on an emergency, sitting tight, waiting for the financial thing to be done, because the hospital won't allow us to operate, saying that Until the bill is cleared, even in a private hospital or a corporate hospital, that the financial approval has to come before we can do an emergency. Yeah. So it makes a huge difference, not only for the patient, for us professionals also. Yeah. We'll be sitting all night waiting for that approval to come. Okay. So this makes a huge difference. I know the argument in certain quarters is, and that's a conversation for a different days, that the rates that are given under Ayushman Bharat can be amended or maybe increased a little, but that's a different conversation for a separate time. Mithali, Yes. it's a completely different television telecast to what we generally have. So what do you make of the stories you've just heard? So, Rishabh, I'm so glad that you called me for this show as well, because literally I am sitting in a government-funded university today, interacting with students who've come from all over the country, to this university, and giving them, some lectures, etc., on how they can make their careers. And there are so many stories, Rishabh, today that I've heard of people and families who benefited from government schemes, be it and especially the women. The Ujjwala Yojana is something we didn't speak about today, but Ujjwala Yojana has benefited crores of women, in terms of making gas available so that they don't have to go and travel to, collect firewood. The water connections, so many people today actually spoke about that, their houses are now connected with a water connection through the Jal Jeevan Yojana,
And that saves so much time of their mothers, to collect water. Because, I'm sitting in Maharashtra today. And this transformation of infrastructure, Dr. Rao talked about roads and logistics. Of course, we are working on that. But this transformation of just bijli, pani, ghar, which are the things that elections have been fought on for decades. Today, they are not only reaching households, but they're reaching the women of the households. And that's creating a completely so Mitali, different narrative. we've had this conversation. We had it very recently, in fact, where we know that the toilet is being made in the name of the woman. The Awas Yojana is in the name of the woman of the household. The Ujjwala connection is in the name of the woman. So it grows across the board. But India lives in its villages. That hasn't changed in 80 years since independence. That was Mahatma Gandhi who said that India lives in its villages, and it is difficult in the backgrounds that we are living in to understand that in a village, the very fact that you have a pakka ghar, that you have a bathroom, that you have running water, these are things that not only impact your day-to-day life, your health, they change your status in society. To have a pakka ghar with a lentil is a huge deal. They change your mindset, they change your self-confidence, let alone the basic, developmental indicators on health and hygiene that we can look at. So now we have the statistics now, Mitali, and I know the statistics, are difficult to corroborate, but we have now the anecdotal evidence as well. What do you make of it? Do we seem to be, heading in the right direction in these schemes? That overall, I'm sure there are problems and lacunae and things that are not perfect. But do we seem to be heading in the right direction? Absolutely, Rishabh. We are, we've embarked on the right direction. And what we now need to do is find models which are working, very, very well, and then scale up those models. For example, the CSR and government partnership is a model that is working phenomenally well, where, a donor from the private sector comes in and says, here's a government scheme. I'll take some of the benefit of the government scheme, also supplement it with my own financing, and then upscale that intervention. And when it comes to toilets, that has worked really, really well, because many of the CSR donors that I'm, working with have taken up and villages upon villages to, build toilets over there. In some of the areas, they have combined their funds with the Swachh Bharat funds. Now, this is also happening with a number of other schemes. Again, Ujjwala is one of them. And then the Jan Dhan, sort of accounts that have been set up. This Jan Dhan, Aadhaar, mobile. Yeah, I wanted to ask you, how much this DBT, how much of a real game changer is it? Because you heard the people, they say, the money comes in my account. I have an account, I get the money directly. Exactly. I don't have to go, because the leaks in the system. Every time the money changes hand, there was a leak in the system. So that doesn't happen. How much of the real game changer is just the DBT Jan Dhan? It's a huge game changer, Rishabh, because it's not only for, individual level beneficiaries, but also for institutional beneficiaries. So as an entrepreneur, for example, many women entrepreneurs, many women who are running self-help groups, and also men who are now running self-help groups and small businesses, they've all gone in for Jan Dhan and, Jan Dhan accounts, where a lot of these benefits, which number of beneficiaries who are running, say, small kirana stores, who you were featuring earlier, their benefits also come through this digital public infrastructure, DPI, which we are calling, and has become a global case study, that they are able to get these benefits directly into their accounts. So designing the model is very difficult, because India has had the money for some time. Okay, we've been a sort of okay economy since 2000 onwards. Okay, but designing the model. So Dr. Rao, I know this is not a particular field of expertise, but we interact on several subjects. So I want to give the example of the shop owner. Now this guy runs a small daily needs dukan. Okay, so he sells you chips, namkeen, Coca-Cola, soft drinks, your masale, your doodh. Okay, so what does the guy need? His biggest problem is cash flow. In order to earn money, you have to have stock. And in order to purchase stock, depending from the distributors and wholesale suppliers, they give you a window, you have to pay them back in 15 days, 2 weeks, whatever. So that 20,000 rupee loan which he's got, he's able to purchase more stock, therefore he's able to sell more product. He's able to sell more product so he can earn a living, and he is motivated because he knows once I return the 20,000, then I qualify for 50,000.
and then my shop becomes a bit better. I start stocking products earlier I could not afford to stock. It changes your entire life. So about are we getting the models right? Dr. Rao. Yeah, we are definitely making a huge progress in this. Rishabh, you may not be aware that when I started medical practice, all I could afford was a bicycle. And when I went for the first loan, the banks were asking me, do you have anything to give as a asset, as a proof? And I didn't have. And the interest I was paying a bank was 2.5% per month. Can you imagine that? Per month? Per month. So if you are, because it was an unsecured loan. Yeah. And I had used it to buy surgical laparoscopy instruments which the hospital didn't have. Now, if you look at these small time shopkeepers, and recently when I was in Delhi, I hired a car, a taxi, and went around visiting all these small Kinara shops in UP, Rajasthan, Madhya Pradesh, with a intent of finding out about what they knew about health, healthy foods and these unhealthy packaged foods. And in the process, I realized the amount of change they have had, because now they are not in the grip of money lenders. Many of these money lenders were collecting money by the evening. Yeah. And they couldn't grow. Who was growing? It was a money lender who was growing, not them. So this direct payment to the bank, giving them low interest loans, allows them to grow and not be totally a slave to the money lender. Yes. It is a kind of what you call slave labor or indentured labor, that term which is used. Yeah, it's no different. Okay. It's no different. I'm sure I've run out of time actually. So. And just a minute, healthy piped water gives you safe water to drink, makes a huge difference as far as waterborne infections are concerned, not only to these shopkeepers but to all the villagers. And many hotels who were using one big tub of water in which they would keep dipping the vessels and washing it, they have running water. It makes a huge difference. The sewage system also helps reduce waterborne infection. These are also helping. So the PM Awas Yojana, when we did the ground reports last year, so PM Awas Yojana is not only that you can build your own house and get 50,000 rupees, 1 lakh, it's about 2 lakh rupees you can get from government, but they also have areas where they built these housing units, and they have proper roads. There's a balcony, there are parks. Every house has a kitchen, it has a bedroom, it has a living room, it has proper sanitation, proper nullies. It's no smoke. Yeah, because of gas. Yeah, and of course gas. So you're looking at fundamental changes that are taking place. I'm hoping that you got, over the course of this 1 hour, a chance to listen to the people who's India. This is our family of our country, who wanted just the basics, and they're getting the basics. Of course, now hopefully aspiration will go up. Now once you have a house, then you want a bicycle, then you want a mobike, then you want a car. Then that's what economic growth is. Fantastic. Dr. Rao, appreciate your time as always. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.